Hello everyone, this is CA PALAK MANEK, and as you all know that our Union Budget 2022 has been announced by our Honorable Finance Minister in Parliament yesterday. So today I am discussing about the direct tax proposals in Finance Bill 2022. So let's begin. What are the changes in the rate of tax, surcharge and cess? So there is no specific change in the slab rates of individual and HUF. There is also no specific deduction, exemptions or allowances which are applicable to individual or HUF have been proposed by the Finance Bill 2022. Let's discuss about the surcharge. There is a slight change in the rate of surcharge and the surcharge provisions that where the total income includes any income by way of dividend or income chargeable under section 111A, that is short-term capital gain on shares and securities, 112, that is long-term capital gain on unlisted securities and other long-term capital gain, and section 112A, that is listed long-term capital gain on listed sale of listed securities of the Income Tax Act 1961, then the rate of surcharge on the amount of income tax deducted in respect of that part of income shall be kept at 15%. There is another change that in case of EOP, association of person consisting of only companies as its members, then the rate of surcharge on the amount of income tax shall be kept at 15%. In case of cooperative society, there is a surcharge rate in case the resident cooperative society has availed the option under section 115 BAD, then the rate of surcharge will be kept at 10%. Another change is surcharge rate in case of resident cooperative society where the total income exceeds 1 crore and up to 10 crores, then the rate of surcharge will be 7%, and if the income exceeds rupees 10 crore, then the rate of surcharge will be 12%. एक दूसरा भी चेंज आया है, AMT कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अभी AMT था 18.5%. It is proposed in the Finance Bill 2022 that the AMT for cooperative society has been reduced to 15%, as similar as that of companies. Deduction under section 80 CCD subsection 2 of the Income Tax Act 1961. Right. Earlier, any contribution made by the central government or any other employer to NPS account of employee, then the deduction on employer's contribution to NPS account shall be eligible as deduction under section 80 CCD to employee if the contribution made by the central government, then the maximum deduction was 14% of his salary. If the contribution made by any other employer, then the maximum deduction shall be 10% of his salary. But Finance Bill 2022 में उन लोगों ने एक slight change किया, minor change है, if the contribution made by the state government, then the maximum deduction allowable to the employee will be 14% of his salary. So the state government employees के लिए ये फायदा कारक है section 80 CCD subsection 2. Another section introduced by the Finance Bill 2022 is section 139 subsection 8A, that is filing of updated return. What is the section? Let's discuss. Any person, whether he has filed a return previously for the relevant assessment year or not, he can file the updated return under section 139 subsection 8A of the Income Tax Act 1961. So what is the time period? The time period is within 24 months from the end of assessment year, that is 2 years from the end of assessment year. कब तक ये रिटर्न आप फाइल कर सकते हो? 2 साल from the end of assessment year. There is a condition, there is a lot of conditions in these sections. One of them is above section shall not be applicable if the updated return is a return of loss. अगर आपने loss का return आपका है तो आप updated return नहीं फाइल कर सकते, और has the effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of return under section 139(4) or 5, right?
अगर आपने पहले रिटर्न 139.4 और 139.5 और अंडर सेक्शन 139.1 में रिटर्न भरा हुआ है और आप अभी अपडेटेड रिटर्न फिर से फाइल कर रहे हो और उसमें आपकी लायबिलिटी इनकम टैक्स की डिक्रीज हो रही है, तो आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते और इट रिजल्ट्स इन रिफंड। अगर आपका अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड का केस बन रहा है तो भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और इंक्रीजेस द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर फाइल रिटर्न। अगर आपने पहले फाइल रिटर्न किया था अंडर सेक्शन 139.1 और उसमें आपने रिफंड क्लेम किया था मान लो 10,000 का, अभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो और उसमें भी रिफंड आ रहा है 20,000 का, देन इट विल इंक्रीज द रिफंड due on the basis of earlier file return, then you cannot file the updated return. Another such condition is amount equal to 25% or 50% as the additional tax or interest due on the additional income furnished would be required to be paid subject to the other condition mentioned in section 139(8)(a. That is, उन लोगों ने कंडीशन डाला हुआ है कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 25% और 50% एज द केस में भी एज द एडिशनल टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको भरना ही पड़ेगा। और आप जब रिटर्न फाइल करोगे तब आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट, दैट इज चलन ऑफ पेमेंट, आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ कंडीशन एज आई अर्लियर सेड। The person shall be ineligible to file the updated return under section 139(8)(a) of the act if the search was initiated under section 132 or books of accounts or other documents or any assets are requisites under section 132(a) or the survey has been conducted under section 133(a) or the notice has been issued under section 132(a), right? Or the assessee has filed the updated return earlier. There is another condition that the assessing officer has information in respect of such assessment year in his possession under section Prevention of Money Laundering Act और ब्लैक मनी एक्ट। अगर आपका नोटिस कोई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आया हुआ है आपको नोटिस, और ब्लैक मनी एक्ट में आया हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट में आया हुआ है नोटिस, तो आप ये रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन अवेल नहीं कर सकते। सो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, पर ये सब कंडीशन के साथ आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये सब कंडीशन में आप फुलफिल हो रहे हो कि नहीं हो रहे। इफ यू आर eligible to file the return, then you have to pay the tax along with the return, right? ये section 115BBH introduced by Finance Bill 2022 and it was a huge demand of this section in this era because the virtual digital asset, that is cryptocurrency का market अभी बहुत बड़ा हो गया है और 95% of the people are doing the transactions in the cryptocurrency. So it was a much needed section. Section 115BBH, taxation of virtual digital asset with effect from assessment year 2023-24. So what are the details of this section? Let's discuss. Tax shall be levied on the income from transfer of virtual digital asset. Clearly mentioned हुआ है कि tax shall be levied on income from transfer of virtual digital asset. That is, अगर आपने कोई बिटकॉइन जैसे कि वो क्रिप्टो करेंसी है आपने वो परचेज किया और बाद में उसको सेल किया, तो tax shall be levied on any income from transfer of virtual digital asset. The rate of tax 30% plus surcharge and cess as applicable to the assessee. आपको डिडक्शन में क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। आपका जो आपने परचेज के टाइम जो कॉस्ट हुआ था आपको वही अलाउ मिलेगा एज अ डिडक्शन। नो एनी अदर एक्सपेंडिचर और अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड टू द असेसी अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। आपको कोई एक्सपेंडिचर, कोई अलाउंस और सेट ऑफ लॉस आपको अलाउड नहीं होगा। सेकेंड थिंग, no set off of loss against any other income computed under any other provisions of the act, whether it's a salary, it's a income from other sources, it's a business income or capital gain. Like आपको क्रिप्टो करेंसी आपने सेल किया तो आपको लॉस हुआ 1 लाख का, और आपका अदर बिजनेस इनकम है जैसे कि आप सैलराइड पर्सन हो तो आपकी 7 लाख की सैलरी है, तो ये 1 लाख का लॉस
इस सैलरी के सामने आपको एडजस्ट नहीं हो सकते। अनदर इंटरेस्टिंग प्रोविजन, loss arising from transfer of virtual digital asset shall not be carried forward to subsequent assessment year, right? So if you have incurred a loss of 2 lakhs from transfer of virtual digital asset, you cannot carry forward to the subsequent assessment year. आप उसको ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और कई सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी में अभी लॉस भी हो रहा है, पर ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। You cannot carry forward to the subsequent assessment year. Another nice provision is gifting of virtual digital asset will also be taxed under section 56(2)(10) of the Income Tax Act 1961, and it is with effect from assessment year 2023-24, right? So अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी आपके कोई रिलेटिव और फैमिली मेंबर को एज अ गिफ्ट दिया तो भी वो एग्जाम नहीं होगा और उसमें टैक्स लगेगा 56(2)(10) के हिसाब से। So it will be considered as an income from other source in the hands of recipient. So they have also provided the definition of virtual digital asset. What can be called as the virtual digital asset? So the definition of virtual digital asset has been provided under section 2 subsection 47A of the Income Tax Act 1961. So what is the virtual digital asset? Any information or code or number or token not being an Indian currency or foreign currency generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value, which is exchanged with or without consideration, with the promise or representation of having inherent value or function as a store of value or a unit of an account, includes its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment schemes, can be transferred, stored and traded electronically. So any kind of information or code or number that generated through cryptographic means, जो आप क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग होता है, providing a digital representation of value which is exchanged with or without consideration, and it can be transferred, stored and traded electronically. It is also to be mentioned that non-fungible token and any other token of similar nature are included in the definition. So let's discuss about the examples. Like आपने कोई बिटकॉइन परचेज किया 3,80,000 में, और आपने जब सेल किया तब उसकी वैल्यू थी INR में 7,80,000, और आपने वो कोई एक्सपेंस भी किया उसके रिलेटेड 50,000 का, तो आपका नेट गेन होगा 7,80,000 माइनस 3,80,000, 4 लाख। कोई एक्सपेंस का अलाउंस आपको मिलेगा नहीं। एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, नो एनी अदर एक्सपेंस और अलाउंस विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। सो 4 लाख पे डायरेक्ट 30%, 1,20,000 plus applicable surcharge and cess. Other head income cannot be set off against the said income, right? एथरम आपने परचेज किया 5,60,000 में, सेल किया 2,80,000 में, आपको कोई एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा लगा 35,000 का, आपको लॉस हुआ 2,80,000 का। लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम और कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपने लिया डोजे कॉइन 40,000 का, 40,000 का लिया आपने, सेल किया 5,000 में, आपने कोई अदर एक्सपेंसेस भी किया 1,500 रुपए का, नेट लॉस हुआ आपको 35,000 का। लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंसिलरी टू दिस सेक्शन उन लोगों ने एक टीडीएस का सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया, टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट टू रेसिडेंट, दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2022. TDS will be levied on payment of transfer of virtual digital asset to any resident. अगर आप कोई रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो for transfer of virtual digital asset, then you have to deduct the TDS and pay the TDS to the central government. The rate of TDS is 1%. So there is a specific provision that if the tax has been deducted under section 194(s), then the no tax shall be collected or deducted in respect of the said transaction under any other provision of the chapter of the act. अगर 194(s) में कोई ट्रांजैक्शन में आपका TDS हो रहा है तो
कोई भी सेक्शन टीडीएस का आपको एप्लीकेबल उसके बाद नहीं होगा. सो 194S विल प्रिवेल, वो प्रिवेल करेगा. व्हाट इज द मॉनिटरी लिमिट? If you have to deduct the TDS, what is the monetary limit? So they have specified that in case of specified person, specified person का उन लोगों ने एक definition भी दिया हुआ है. तो in case of specified person, if the aggregate value of such consideration is less than 50,000 during the financial year, then the no TDS under section 194S. If the aggregate value of such consideration exceeds rupees 50,000, then TDS under section 194S will be applicable. In case of any other person, if the aggregate value of such consideration is less than 10,000, then the TDS will not be applicable. If it exceeds 10,000, then the TDS under section 194S will be applicable. So what is the definition of specified person? उन लोगों ने एक specified person भी mention किया हुआ है कि what is the definition of specified person. If you are an individual or HUF and if you have a business, then it's if your turnover or gross receipts in immediately preceding financial year is less than 1 crore, then you will be considered as a specified person. And if you are an individual or HUF having a profession, and if your gross receipts is less than 50 lakhs in immediately preceding financial year, then you will be considered as a specified person. If you are an individual or HUF and you have other head of income other than business income, then also you will be considered as a specified person. So if आपका बिजनेस चल रहा है और आपका टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ का है तो भी आप स्पेसिफाइड पर्सन हो. आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, बिजनेस के अलावा आपकी इनकम है, तो भी आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, तो आप स्पेसिफाइड पर्सन में माने जाओगे. तो उसके लिए लिमिट होगा 50,000 का. फॉर एनी अदर पर्सन द लिमिट विल बी 10,000. सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल. लाइक आपने कोई बिटकॉइन परचेस किया एंड आप इंडिविजुअल हो और आपका बिजनेस है और बिजनेस इनकम 90 लाख है और आपने कंसिडरेशन 46,000 का आपने परचेस किया. सो द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन इज लेस देन 50,000. सो टीडीएस ऑब्लिगेशन विल नॉट बी अराइज इन दिस केस. सेकेंड एग्जांपल, एथेरम. आपने एथेरम परचेस किया पर आप पार्टनरशिप फर्म हो. पार्टनरशिप फर्म ने एथेरम परचेस किया और द कंसिडरेशन इज 47,000. then the TDS under section 194S will be applicable. And then what is the TDS amount? 47,000 into 1%, 470. आप डोजेकॉइन आपने परचेस किया. If you are a specified person, that is individual or HUF having the business income less than 1 crore and the professional income less than 50 lakhs. Consideration था 1,05,000. Yes, TDS will be applicable as it exceeds 50,000. What is the amount of TDS? 1050. आपने टेथर परचेस किया और आप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने टीथर परचेस किया. कंसिडरेशन था 9,700 का. TDS obligation will not be arise because it does not exceed 10,000 for any other person. So TDS will not arise in this case. Other TDS provision introduced by the Finance Bill 2022, that is section 194R. What is 194R? TDS on benefit or perquisite of business or profession. And this section will be applicable from 1st July 2022. So अगर आप कोई benefit और perquisite of business और profession के कोई person को transfer कर रहे हो, whether in cash or kind, you will have to deduct the TDS at the rate of 10% of the value or aggregate of such benefit or perquisite. So what is the payer? कौन payer माना जाएगा? Any person providing any benefit or perquisite, or in case of company itself or its principal office. What is the pay? Pay is the resident. Who will be pay? Pay is the resident. अगर आप कोई रेसिडेंट को एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर इन कैश और काइंड दे रहे हो तो आपको 10% TDS काटना पड़ेगा. व्हाट इज द मॉनिटरी लिमिट? इफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट इज और लाइकली टू बी प्रोवाइडेड डज नॉट एक्सीड रुपीज 20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अगर ये बेनिफिट और परक्विजिट 20,000 से कम है तो TDS का ऑब्लिगेशन नहीं आएगा.
If it exceeds rupees 20,000, then the TDS obligation will be there under section 194R. But एक प्रोविजन है कि this section will not be applicable to any individual or HUF having business income less than 1 crore, or if he is doing the profession, then the professional income or gross receipt is less than 50 lakhs in immediately preceding financial year, then this section will not be applicable to individual or HUF specified in the conditions. 194S, we have already discussed about that. Section 194IA, that is TDS on purchase of immovable property. अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो और उसका वैल्यू कंसिडरेशन ₹50 लाख से ज्यादा है, तो आपको 1% यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस. दैट वाज द अर्लियर प्रोविजंस. बट उन लोगों ने एक चेंज किया है, द स्लाइट चेंज मेड बाय द फिनांस बिल 2022, दैट इज if the consideration for transfer of immovable property or its stamp duty value, whichever is higher, will be considered for deducting the TDS under section 194IA. That is, अगर आपका consideration है प्रॉपर्टी का 40 lakhs और उसकी stamp duty value है 35 lakhs, then the consideration, that is whichever is higher, will be considered for deducting the TDS under section 194IA. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. इफ आपका कंसिडरेशन है प्रॉपर्टी आपने कोई परचेस किया और आपने 50 लाख में वो प्रॉपर्टी परचेस किया और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 55 lakhs, देन द टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 1% ऑन द वैल्यू ऑफ 55 lakhs, दैट इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी. सो उन लोगों ने सिंपल कर दिया, कंसिडरेशन पेड टुवर्ड द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इट्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, whichever is higher, and if any of the above exceeds rupees 50 lakhs, then the TDS under section 194IA will be deducted at the rate of 1%. Amendment in section 37 of the Income Tax Act 1961. ये प्रोविजन बिजनेस क्लास पर्सन के लिए एप्लीकेबल है और ये प्रोविजन में उन लोगों ने एक अमेंडमेंट किया हुआ है. What is that amendment? Let's see. The new explanation to section 37(1) of the Income Tax Act 1961, that is, any expenditure incurred by assessee for any purpose which is an offence under or which is prohibited by any law for the time being in force in India or outside India shall not be allowed as a business expenditure. Second, to provide any benefit or perquisite to a person whether or not carrying or business or exercising a profession, acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law or rule or regulation or guidelines for the time being in force governing the conduct of such person. That is simple. If you are giving any gift, travel facility, hospitality, cash or any other monetary grant, right? If you are a pharmaceutical company or a hospital, and if you are giving a gift, travel facility, hospitality, cash or any other monetary grant to the medical professional or their association, then this expenditure will not be allowed as a business expenditure, because ये मेडिकल प्रोफेशनल का जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो ये सब बेनिफिट्स और गिफ्ट्स लेने से स्पेसिफिकली मना करता है. दिस इज अगेंस्ट their professional ethics. So this expenditure will not be allowed as a business expenditure. Third provision, any expenditure incurred by assessee to compound any office under any law for the time being in force in India or outside India. अगर आप कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है, और ये डिस्प्यूट को कंपाउंड करने के लिए आपने कंपाउंडिंग फी दिया, तो वो आपको एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर. आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर वो नहीं मिलेगा. सो दीज आर द अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 37 of the Income Tax Act 1961. The new section 115 BBI, that is specified income of certain institutions registered under section 1023C or section 11 or section 12 of the Income Tax Act 1961. So क्या है ये
amendment or section? Let's discuss. अगर आपकी कोई स्पेसिफाइड इनकम है और आप ट्रस्ट हो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और सेक्शन 11 और सेक्शन 1023C, then the rate of income tax will be 30% on the aggregate of specified income. What is the meaning of specified income? अगर आप ट्रस्ट हो और आपने कोई इनकम एक्यूमुलेटेड की और सेट अ पार्ट इन एक्सेस ऑफ 15%, 15% से ज्यादा वाली वैल्यू आपने कोई एक्यूमुलेट किया है, where the such accumulation is not allowed under any specific provision of the Income Tax Act 1961. That is, अगर आपने कोई इनकम ट्रस्ट का है, वो 5 साल के लिए एक्यूमुलेट कर दिया और वो आपने 5 साल में कोई उसका एप्लीकेशन नहीं किया, तो वो इनकम आपकी स्पेसिफाइड इनकम मानी जाएगी. सेकेंड, द डीम्ड इनकम रिफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन टू 4 to third proviso to clause 1023C. Third, any income which is not exempt under section 1023C. कोई इनकम जो एग्जाम नहीं है 1023C में, वो भी स्पेसिफाइड इनकम मानी जाएगी. एनी इनकम विच इज डीम्ड टू बी इनकम अंडर सेक्शन 21st प्रोवाइडो टू क्लोज 23C, दैट इज कोई आपने अनरीजनेबल बेनिफिट दिया ट्रस्टी को और द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो भी वो स्पेसिफाइड इनकम मानी जाएगी. सो व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन स्पेसिफाइड इनकम? सो आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स होगा 30% ऑन द स्पेसिफाइड इनकम, ऑन दैट पार्ट ऑफ इनकम ओनली. On the remaining amount at the rate with which the assessee would have been chargeable if the total income of the assessee would have been reduced by the aggregate amount of the specified income under the above. अगर आपका नॉर्मल ट्रस्ट कोई है तो उसका नॉर्मल इनकम भी है और स्पेसिफाइड इनकम भी है, तो स्पेसिफाइड इनकम के पोर्शन पे ही 30% लगेगा. अदर नॉर्मल इनकम जो आपका रेट एप्लीकेबल है और स्लेब रेट एप्लीकेबल होता है उसमें ही चार्ज होगा. Another interesting provision, that is no deduction in respect of any expenditure or allowance or set off of any loss shall be allowed to the assessee under any provision of the act in computing the specified income. अगर आपकी 1 लाख की स्पेसिफाइड इनकम है और उसके सामने 30,000 का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो दैट एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड एज एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द स्पेसिफाइड इनकम. सो दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग. Let's discuss about the socio-economic welfare measures. So, last date for commencement of manufacturing or production under section 115BAB of the Income Tax Act 1960. What is 115BAB? That is concessional rate of tax for newly domestic manufacturing company. If you have started your business on or after 1st October 2019 and on or before 31st March 2023, then you will be eligible to pay the tax at the rate of 15% under section 115BAB, that is optional section, and which can be adopted by the companies. But they have, due to COVID-19 restrictions and the positions, they have amended the date of commencement of manufacturing or production of any article or thing to 31st March 2024. स्टार्टअप के लिए कोई अमेंडमेंट है. एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर एलिजिबल स्टार्टअप फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 80IAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हो और आपका स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन 31st March 2022 तक है, तो यू आर एलिजिबल टू क्लेम द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 80IAC, that is the 3 consecutive year after 10 assessment year. But they have extended the period of incorporation from 31st March 2022 to 31st March 2023. Another exemption of amount received for medical treatment and on account of death due to COVID-19. ये exemption उन लोगों ने प्रेस रिलीज से 25 जून 2021 में डिक्लेयर किया था, बट उसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में कोई था नहीं. तो बाय दिस फिनांस बिल 2022 they have introduced a particular section, that is any sum paid by employer in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment
or treatment of any member of his family in respect of any illness related to COVID-19. अगर आपको आपके एम्प्लॉयर के पास से कोई भी आपकी कोविड-19 की ट्रीटमेंट का कोई भी एक्सपेंडिचर और एनी काइंड ऑफ ग्रांट और एनी मनी if you have received from your employer, then it shall not be forming part of perquisite under clause 2 of the section 17 of the act. Second, any sum of money received by a member of family of deceased person from employer of the deceased person. अगर कोई फैमिली मेंबर ने एम्प्लॉयर के पास से कोई मनी रिसीव किया, then it not be considered, shall not be income of such person and shall not be taxed under section 56 to 10 of the Income Tax Act 1961. अगर कोई पर्सन का कोविड-19 से इलनेस से डेथ हो गया, सडनली डेथ हो गया, तो उसके फैमिली मेंबर को इन केस 15 लाख मिला उसके एम्प्लॉयर के पास से, then it will not be considered as a income from other sources under section 56 to 10 of the act. Okay. Third, any sum of money received by individual from any person in respect of any expenditure actually incurred by him or his medical treatment or treatment of any member of his family in respect of any illness related to COVID-19 subject to such condition. अगर कोई भी इंडिविजुअल ने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए कोई भी पर्सन के पास से आपको पैसा मिलता है, कोविड-19 ट्रीटमेंट का रीइंबर्समेंट मिलता है, तो देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इनकम ऑफ सच पर्सन एंड शैल नॉट बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 56 to 10 ऑफ द एक्ट. बट देयर इज अ कंडीशन. इफ any sum of money received by the family of such deceased person from any other person like insurance agency or insurance companies, आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाला और आपको पैसा मिलता है और फैमिली मेंबर को पैसा मिलता है, then it will not be considered as an income if such sum or aggregate of such sum does not exceed rupees 10 lakhs but the cause of death of such person is illness related to COVID-19 and the payment is received within 12 months from the death of such person. दो कंडीशन डाला हुआ है. अगर कोई पर्सन का कोविड-19 से इलनेस से डेथ हो गया, उसके फैमिली मेंबर ने इंश्योरेंस एजेंसी में क्लेम किया और उसको इंश्योरेंस एजेंसी के पास से 9 लाख का क्लेम मिला और वो 9 लाख का क्लेम उसको 12 महीने में मिल गया, then it will not be taxed under section 56 to 10 of the Income Tax Act 1961. What are the penalties provisions? Section 270A2, that is penalty for failure to answer the questions, sign statements, furnish information, written or statement. If आपको कोई नोटिस आता है, आपने उसमें उन लोगों ने इनकम टैक्स में से आपको कोई नोटिस आता है, आपने उसको आंसर नहीं किया, कोई भी रिप्लाई नहीं किया और कोई फर्निश इंफॉर्मेशन जो उन लोगों ने मांगी थी वो आपने नहीं दिया, then the penalty was ₹100 for every day during which failure continues. It was earlier, but now they have amended the penalty amount and it is increased to ₹500 for every day during which failure continues, and it will be effective from 1st April 2022. Another section introduced by Finance Bill 2022 is 271 AAE 271 AAE, that is penalty for passing on unreasonable benefit to trustee or specified person. अगर आप ट्रस्ट हो और आप रजिस्टर्ड हो सेक्शन 11 that is 11, 12 AA और 1023C में, आप कोई ट्रस्ट हो और आप रजिस्टर्ड हो सेक्शन 1023C, 12A और सेक्शन 11 और आप कोई अनरीजनेबल बेनिफिट आपने कोई ट्रस्टी को ट्रांसफर किया और स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 13(3) ऑफ द एक्ट, then the sum equal to the aggregate amount of income applied directly or indirectly by such person will be considered or will be levied as a penalty if the violation committed first time during any previous year. After that,
after the second violation, after the first violation, if the violation is noticed again in any subsequent previous year, then the sum equal to 200% of the aggregate amount of income of such person applied directly or indirectly by such person. That is simple and short and sweet है सेक्शन कि अगर आप कोई ट्रस्ट हो, चैरिटेबल ट्रस्ट है मान लीजिए, और उसने कोई ट्रस्टी को अनरीजनेबल बेनिफिट ट्रांसफर किया, तो पेनल्टी उसको फर्स्ट वायोलेशन में लगेगा सम इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम अप्लाइड. On second violation, the sum equal to 200% of the aggregate amount of such income of such person applied. That is the provisions. Another provisions, that is another small amendments that is introduced by Finance Bill 2022, that is, if it is proposed to provide that explanation that disallowance under section 14A of the Income Tax Act 1961 shall attract, even though exempt income has not been accrued or arised or received during the previous year in which such expenditure has been incurred to earn the exempt income. क्या कहना चाहता है ये प्रोविजन? ये प्रोविजन ऐसा है कि अगर आपने कोई खर्चा किया, इफ यू हैव इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर टू अर्न एनी exempt income, but you have not actually earned any exempt income during the previous year, then this expenditure will not be allowed as a business expenditure or will not be allowed as an expenditure under any provision of the Income Tax Act 1961. So, अगर आपने मान लीजिए कोई 20,000 का खर्चा किया टू अर्न द एग्जाम इनकम और वो प्रीवियस ईयर में आपको कोई एग्जाम इनकम रिसीव नहीं हुआ और अक्रूड नहीं हुआ, तो ये 20,000 का किया हुआ खर्चा आपको आपके बिजनेस इनकम के सामने एडजस्ट नहीं मिलेगा और सेट ऑफ और डिडक्शन नहीं मिलेगा. दैट इज द प्रोविजन amended by Finance Bill 2022. It was a clarificatory in nature. Second, any cess or surcharge or any income tax shall not be allowed as a business expenditure. ये बिजनेस इनकम के सामने आपको कोई भी इनकम टैक्स, ये दिस इज द कॉमन रूल दैट एनी इनकम टैक्स और सेस और सरचार्ज आपको बिजनेस इनकम के सामने खर्चे में अलाउ नहीं होता. बट some high courts have stated that the cess, that is health and education cess and surcharge, can be claimed as a expenditure against the business income. But the Finance Bill 2022 has clarified that any cess, surcharge or any other tax shall not be allowed as a business expenditure, and this section has been amended retrospectively with effect from assessment year 2005-2006. Third, अभी तक क्या होता था earlier that if any undisclosed income has been found during the period of raid, the people are setting off this income against their business losses. But the Finance Bill 2022 has introduced section 79A of the Income Tax Act 1961 that notwithstanding anything contained in the act where any undisclosed income detected during the search initiated under section 132, 132A or survey under section 133A, then the no loss whether brought forward or otherwise would be allowed to be set off against such income. अगर कोई असेसी के वहां 133 में और 132 में रेड हुआ और वो रेड में अनडिस्क्लोज इनकम 7 लाख का फाउंड हुआ, वो अनडिस्क्लोज इनकम आप आपके बिजनेस लॉस के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकोगे. दैट इज सेड बाय द सेक्शन 79A of the Income Tax Act 1961. Second, what is the taxation of bonus stripping and dividend stripping? That is, this section will be applicable from assessment year 2023 and 24. So, पहले bonus stripping was applicable on seeds only, but now they have introduced that and they have proposed that the bonus stripping under section 94(8) will also be applicable to securities. वो सिक्योरिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा. डिविडेंड स्ट्रिपिंग,
डिविडेंड स्ट्रिपिंग में भी उन लोगों ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि डिविडेंड स्ट्रिपिंग का प्रोविजन बिजनेस यूनिट्स सच एज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा. सो दैट वाज द brief analysis of the DirectX proposals in Finance Bill 2022. I hope you enjoy that, and if you like my video, if you enjoy my video, then please like and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.